Hello everyone, a very good evening to all of you. This is Ashwin Ramani here, research analyst at SBI Securities. I hope I'm audible and I hope you are able to see my screen. If you all can give me a heads up in the chat box. So अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो. So that I know you all are with me live in the session. Sudhakar ji, good afternoon, good evening. Sachin ji, hello, audible. Okay, perfect, great. We just wait for a couple of minutes until people join in and then we should be good to go with the session. Audio, video clear. Great. Sudhakar ji is saying audio, video is clear. Perfect. Murthy ji is saying good evening, Murthy ji. So for the ones who have just joined in, you all can just let me know in the chat box if I'm audible, if I'm visible. We just wait until 4:03 and then we'll start with the session on bull call ladder spread strategy today. Great. Harish ji is here as well. Good evening, Harish ji. So Nifty eventually it gave a closing about 25,200. I think 25,219 is where the closing was today. Okay. So before we start off with the session today, so how many of you all are actually aware of this strategy called as bull call ladder spread strategy? How many of you have heard about it, or how many of you all have tried? If you all can let me know in the chat box. Or is it the first time that you're going to learn about what ladder spreads are? Because I'm pretty sure you might be knowing what a normal spread is. I think we discussed about ratio spreads. I think we discussed about back spreads in one of our earlier sessions. Anyone has any idea about ladder spreads? कि क्या होता है ladder spreads में? If you all can let me know. Only know bull call spread. Sudhakar ji saying first time. Okay. Great. Superb. First time. Okay. Great. अच्छा है. So इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है बुल कॉल लैडर स्प्रेड. देखेंगे इसको हम कब यूज करते हैं, इसको क्या लेके हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसमें क्या बाई करते हैं, क्या सेल करते हैं. देन वी विल सी ये स्ट्रैटेजी कौन से मार्केट में डिप्लॉय करना होता है, या सिमिलर टू रेशियो स्प्रेड्स बट स्लाइट वेरिएशन. We'll discuss ki what is the difference between a normal spread, ratio spread and a ladder spread. Sell and at the money, call and buy to that is not ladder spread, Murthy ji. That is, I think you're talking about back spreads and front spreads. Santosh ji is asking, I'm new. Okay, no problem. Amit ji is saying good evening, Amit ji. Okay, so today let's begin our session on bull call ladder spread today. So what are we going to learn in the next 35 to 45 minutes is कि सबसे पहले बुल कॉल लैडर स्प्रेड होता क्या है वो हम लोग जानेंगे. सेकेंडली ये स्ट्रैटेजी, ये जो ऑप्शन स्ट्रैटेजी है, ये बुल कॉल लैडर स्प्रेड जो है, कब उसको हम डिप्लॉय करते हैं. बुलिश मार्केट, क्या आपका व्यू क्या होना चाहिए? बुलिश होना चाहिए, बेरिश होना चाहिए, साइडवेज होना चाहिए, मॉडरेटली बुलिश होना चाहिए, या आउटराइट बुलिश होना चाहिए. Then we will look at the scenario analysis like we'll do a detailed analysis of, let's say you do a bull call ladder spread. मार्केट वही के वही रह जाएगा तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस है, नीचे जाएगा तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस है, ऊपर जाएगा तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस है. एंड लास्ट में वील आल्सो डिस्कस अबाउट द की स्ट्रेटजी डिटेल्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड कि इसका क्या कैपिटल है, क्या ब्रेक इवन है, when should you be exiting, when is it that till what time should you be holding on to your position, etc.
So let us discuss that, but before I start, let us first understand what a bull call ladder spread is. Now, before I move to bull call ladder spreads, how many of you all are aware of this strategy called as bull call spread? If you all can let me know in the chat box. So there is something called as bull call spreads. There is something called as ratio spread. And now we are going to learn about something called as ladder spread. So how many of you all are aware of bull call spread? If you all can let me know in the chat box. So we'll keep the session engaging. We'll keep it interactive. If you know about what a bull call spread is, so if you can let me know in the chat box कि bull अगर आपको एक bull call spread बनाना होता है तो उसमें आप क्या खरीदते हो और क्या बेचते हो? If you all can let me know in the chat box. Sachin ji is saying you buy in the money call and you sell an out of the money call. Okay, so you can so usually in a bull call spread it's a two leg strategy. इसमें क्या होता है आप बाय एट द मनी कॉल करते हो, सो यू कैन इवन बाय इन द मनी एज वेल, और आप सेल करते हो आउट ऑफ द मनी कॉल. करेक्ट. इसमें क्या होता है, एट द मनी कॉल एक लॉट बाय करते हो, आउट ऑफ द मनी कॉल भी आप एक लॉट सेल करते हो. मतलब मान लो अभी निफ्टी 25,200 में है, तो आप 25,200 का कॉल बाय करके मान लो एक 25,400 का कॉल आप सेल करते हो, या 25,500 का कॉल सेल करते हो, या 25,300 का कॉल सेल करते हो. सो द स्प्रेड डिफरेंस कैन बी 100 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स. आइडियली ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि दोनों जो डिफरेंस है वो स्प्रेड डिफरेंस हैज टू बी 200 पॉइंट्स और 300 पॉइंट्स, बट आइडियली shouldn't go beyond 300 points. You can do a 100 point spread or a 200 point spread or a 300 point spread. आप यूजुअली बुल कॉल स्प्रेड हम कब डिप्लॉय करते हैं? हमारा व्यू क्या होता है बुल कॉल स्प्रेड में? आर वी बुलिश, आर वी बेरिश, आर वी रेंज बाउंड, और आर वी वॉलेटाइल? इफ यू ऑल कैन लेट मी नो इन दी चैट बॉक्स. एक नॉर्मल अगर हम या एग्जैक्टली इट इज आल्सो कॉल्ड एज डेबिट स्प्रेड्स. यस, बिकॉज उसका बाई प्रीमियम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दी सेल प्रीमियम, सो द नेट रिजल्टिंग फिगर दैट यू गेट is positive, and when it is positive it is called as debit spread. So usually यहाँ पे व्यू हमारा moderately bullish होता है. Correct. In a bull call spread our view is moderately bullish. Can I say simple? Bull call spread is the most simplest strategy. I think anyone who gets started in an option strategy, जो सबसे पहला जो strategy सीखते हैं वो है bull call spread. ठीक है. अच्छा, now can you all tell me call ratio spread को हम कैसे डिप्लॉय करते हैं? इफ यू कैन लेट मी नो हाउ डू वी डिप्लॉय अ कॉल रेशियो स्प्रेड. एनीवन इन द चैट बॉक्स who want to take a guess? How do we do ratio spreads, and how different is ratio spreads from a bull call spread? So bull call spread we know हम एक at the money call buy करते हैं और एक out of the money call sell करते हैं. तो क्या लगता है कॉल रेशियो स्प्रेड में हम क्या करते हैं? एनीबडी? आई थिंक मैंने वेबिनार किया हुआ है रेशियो स्प्रेड्स के बारे में, सो आई एम एक्सपेक्टिंग राइट आंसर्स फ्रॉम यू, एंड आई एम श्योर कि जितने लोग आज ये लाइव सेशन में है सारे लोग ने मेरा सेशन अटेंड तो किया हुआ है. आई थिंक बैरिंग वन और टू, आई डोंट सी एनीवन हु हैज नॉट अटेंडेड माय सेशन अर्लियर. सो इफ यू कैन टेल मी व्हाट डू वी डू इन अ कॉल रेशियो स्प्रेड? Yeah, we can sell at the money call, buy to. So usually what happens in a ratio spreads is we buy an at the money call, which is one lot. And see, I'm not talking about front spread or back spread. Normally make sky bull. So we sell an out of the money call. And how many lots do we sell? Can I say exactly? In ratio spreads, what do we do is we buy one lot of at the money call and we sell two lots of out of the money call, right? सो इट इज वेरी सिमिलर टू अ बुल स्प्रेड. तो बुल स्प्रेड में क्या होता है, एक लॉट कॉल बाय करते हैं, एक लॉट कॉल सेल करते हैं. बट रेशियो, क्योंकि रेशियो में हमें एक स्ट्रेटेजी बनाना होता है, तो इट हैज टू बी 1:2 या 2:3. ये रेशियो में हम बनाते हैं. सो इन अ रेशियो स्प्रेड व्हाट हैपेंस इज वी बाय एन एट द मनी कॉल एंड वी सेल एन आउट ऑफ द मनी कॉल. इसमें बुल कॉल स्प्रेड में दोनों में एक एक लॉट है, बट रेशियो स्प्रेड में एट द मनी कॉल एक लॉट बाय करते हैं और आउट ऑफ द मनी कॉल दो लॉट हम सेल करते हैं. करेक्ट. बिकॉज यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो 1:2 का रेशियो है. अगेन द व्यू इज मॉडरेटली बुलिश. वी वांट मॉडरेटली बुलिश व्यू इन रेशियो स्प्रेड्स एज वेल. Guys, what should be the expiration for both the strikes?
अगर आपने एक एट द मनी कॉल का एक एक्सपायरी सेलेक्ट किया है, तो आउट ऑफ द मनी कॉल का भी एक्सपायरी क्या होना चाहिए? शुड इट हैव सेम एक्सपायरी और बोथ शुड हैव डिफरेंट एक्सपायरीज योर? क्रेडिट स्प्रेड्स आर उल्टा होती है. फॉर एग्जांपल बुल कॉल स्प्रेड इज अ डेबिट स्प्रेड स्ट्रेटजी. क्रेडिट स्प्रेड में क्या होता है? आप एट द मनी कॉल सेल करके आउट ऑफ द मनी कॉल बाय करते हो. सो दोज आर क्रेडिट स्प्रेड्स. सो क्रेडिट स्प्रेड्स में बुल पुट स्प्रेड एंड बेयर कॉल स्प्रेड. बट सिंपल बुल कॉल स्प्रेड में एग्जैक्टली. सो रिमेंबर द एक्सपायरी हैज टू बी द सेम. अगर आपने जो एट द मनी कॉल बाय किया वो 31 जुलाई का एक्सपायरी है, तो जो कॉल सेल किया है उसका भी एक्सपायरी 31 जुलाई होना चाहिए. सिमिलरली फॉर रेशियो स्प्रेड्स एज वेल. नाउ कैन एनीवन टेक अ गेस कि लैडर स्प्रेड में क्या हो सकता है? आई मीन इट्स ओके इवन इफ यू गेट इट रॉन्ग, बट जस्ट थिंक ऑफ द नेम लैडर. लैडर में क्या होता है और क्या लगता है लैडर में हम कैसे स्ट्रेटेजी बनाते हैं? एग्जैक्टली इन डिफरेंट एक्सपायरीज वी गो फॉर कैलेंडर स्प्रेड. सो जैसे कैलेंडर एक हिंट मिलता है बिकॉज देर आर टू डिफरेंट डेट्स. तो कैलेंडर में अलग एक्सपायरी होता है, रेस्ट ऑल मेजरली एक सेम एक्सपायरी होता है. Harish ji is saying different expiry. No, see in ratio spreads and bull call spreads, both will have same expiry only. Even in ladder spread, we have same expiry. But if you can take a guess कि ladder spreads क्या होता है, just take a random guess. It's fine. I mean, wrong answers are okay. It is on very similar lines to a bull call spread and a call ratio spread. That's the hint that I can give you at this point. If anyone wants to try what a ladder spread is without looking at the Google, okay. So ladder spreads में क्या होता है? You buy an at the money call, one lot. You sell an out of the money call, one lot. So सर यहाँ पे तो बाय एट द मनी कॉल वन लॉट, सेल आउट ऑफ द मनी कॉल वन लॉट. तो ये तो सर ये तो बुल कॉल स्प्रेड ही हो गया ना. इसमें भी सेल आउट ऑफ द मनी कॉल वन लॉट अगेन. यहाँ पे भी द व्यू इज मॉडरेटली बुलिश. Now, can anyone tell me what is the difference between a call ratio spread and a ladder spread here? So in call ratio spread, we bought an at the money call and we sold two lots of an out of the money call. In ladder spread, we buy an at the money call, we sell an out of the money call, and we again sell an out of the money call here. So what can be the difference between a ratio spread and a ladder spread now? If anyone can take a guess and let me know in the chat box. क्या हो सकता है? Because see call ratio spread में भी buy at the money call one lot and sell out of the money call two lots. तो इसमें भी it's three lots. यहाँ पे भी buy at the money one, sell out of the money one and sell out of the money one. So 333 है. The view is also the same. So how different is a ladder spread from a call ratio spread here? Yes. The answer lies in, so ये जो sell out of the money call दो lot करते ratio spread में, ये same strike है. So ये जो दो lot बेचना होता है वो same strike होता है. So let's say if you are buying a 25,200 call, so 25,400 call अगर sell करना है वो two lots का, so 25,400 ही sell करेंगे हम. But let's say if you are doing a ladder spread, so let's say you buy a 25,200 call option, you have to sell a 25,400 call option. The third sell would be even far away OTM, which will be 25,600 option. So there are different strikes here. Whereas call ratio spread में आप देखोगे ये जो call sell करते हैं वो same strike है. So this would be 25,200 one lot. This would be 25,400 two lots. Whereas in ladder spread it will be 25,200 call, 25,400, 25,600. All three are different strikes. यहाँ पे call buy has one strike, call sell has two lots but same strike. Similarly, अगर यहाँ पे देखोगे 25,200, 25,400, both are one lot each. Got the difference between bull call spread, ratio spreads and ladder? Ladder कैसे आप एक के ऊपर आप चढ़ते हो, right? Think of a ladder here. You keep one step, then you take one step, then you take one step higher. So similarly, ladder में three different strikes होते हैं. That's the easiest way to remember what a ladder spread is. Is this part clear, guys? Got the difference between a bull call spread, a call ratio spread and a ladder spread? So ladder spread में क्या होता है? हम एक at the money call buy करते हैं, फिर एक out of the money call बेचते हैं, फिर और दूर वाला एक out of the money call बेचते हैं. So it's a three leg strategy.
एंड जो एट द मनी कॉल है और आउट ऑफ द मनी कॉल है और तीसरा आउट ऑफ द मनी कॉल है, तीनों का जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो डिफरेंट होगा, बट तीनों का जो एक्सपायरी होगा दैट विल बी ऑल सेम एक्सपायरी, एंड तीनों का जो लॉट साइज होगा दैट विल बी 111. Is this part clear, guys? If you all can let me know in the chat box. Understood what a ladder spread is? हम इसको कैसे डिप्लॉय करते हैं? And the view will be moderately bullish. Obviously, अगर आप bull call ladder spread है, so I will write here it's a bull call ladder spread. So similarly, अगर आप bear put देखोगे तो so you will buy an at the money put, sell an out of the money put, and sell far away out of the money put here. So this is the difference between a ladder spread, ratio spread. Ratio में remember 1:2, 2:3 का ratio होना चाहिए. बुल कॉल स्प्रेड सिंपल है, एक बेचा, एक खरीदा, एक बेचा. रेशियो में एक खरीदा, दो बेचा. लैडर स्प्रेड में एक खरीदा, दूसरा बेचा, तीसरा बेचा, ऐसे. सो दैट इज हाउ यू रिमेंबर व्हाट लैडर स्प्रेड्स आर. Now, when do we deploy these ladder spreads? So like we just discussed, it's a three-legged option strategy because इसमें तीन legs involved है. And this strategy is just an improvement of the bull call spread strategy. हमने देखा था bull call में you buy one lot of at the money call and you sell one lot of out of the money call. In ladder, you go one step higher. You buy an at the money call, you sell an out of the money call, and you sell one more lot of out of the money call here. So that is the only difference between a bull call spread and a ladder spread. तो आप ladder spread को एक extension मान के चल सकते हो bull call spread का. Secondly, कब deploy करते हैं? So this is deployed when the markets are expected to rise very slightly and with a substantial reduction in volatility. मतलब ये स्ट्रैटेजी वैसे स्टॉक्स या वैसे इंडेक्स पे डिप्लॉय करना चाहिए उस टाइम पर जहां पे आपको लगता है कि वॉलिटिलिटी एकदम तेजी से नहीं बढ़ेगा, एकदम धीरे धीरे होगा. फॉर एग्जांपल अभी आप करंटली आप विक्स देख रहे हो कैसा है अभी मार्केट में. देयर इज एब्सोल्युटली नो राइज इन दी वॉलिटिलिटी एट दिस पॉइंट. ओके, द वॉलिटिलिटी इज ऑलमोस्ट फ्लैट. मतलब थोड़ा सा धीरे धीरे आपका वॉलिटिलिटी बढ़ना चाहिए. और आइडियली यू शुड प्रेफर दो स्टॉक्स जिसका आईवी एकदम काफी हाई है. मतलब इंप्लाइड वॉलिटिलिटी है जो आईवीपी है दैट इज अबाउट लेट्स से 90%, 95%, एंड थोड़ा सा वॉलिटिलिटी ड्रॉप हो सकता है. यू डोंट वांट अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन वॉलिटिलिटी. दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. अब वॉलिटिलिटी कब बढ़ सकता है? व्हेन इज द टाइम व्हेन द वॉलिटिलिटी राइजेस अ लॉट? इट यूजुअली इफ यू सी वॉलिटिलिटी स्पाइक्स अकर नियर टू कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स. कुछ डिविडेंड हो गया या बोनस हो गया या स्प्लिट हो गया या कभी कुछ अर्निंग्स आता है. फॉर एग्जांपल दिस इज द सीजन व्हेन अर्निंग सीजन चल रहा है अभी. अभी फॉर एग्जांपल इफ यू नो टुमारो देयर इज वन स्टॉक दैट इज गोइंग टू डिक्लेयर रिजल्ट्स, हो सकता है अभी के लिए वॉलिटिलिटी बढ़ सकता है या रिजल्ट्स के बाद वॉलिटिलिटी घट सकता है. So when you think because of any important event the volatility is going to rise, that is the time you should be avoiding this strategy. The times when you feel the volatility is going to remain flat or the volatility has already peaked out and there is going to be a reduction in volatility, that is when you should be deploying a bull call spread. So for example, budget के पहले हम deploy नहीं करते, earnings के पहले हम deploy नहीं करते, या कुछ एक major news आने वाला है, major announcement आने वाला है, उसके पहले हम deploy नहीं करते. हम तब डिप्लॉय करते हैं जब वॉलिटिलिटी ऑलरेडी पीक आउट हो चुका है और या तो वॉलिटिलिटी अब गिर सकता है, वॉलिटिलिटी नीड्स टू कूल ऑफ. और ऐसा कंडीशन पे जहाँ पे वॉलिटिलिटी ऑलमोस्ट फ्लैट है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, द वॉलिटिलिटी इज मूविंग इन अ टाइट रेंज. दोज आर द टाइम्स व्हेन यू शुड बी डिप्लॉइंग दिस स्ट्रेटजी. ठीक है. एंड द डिप्लॉयमेंट ऑफ दिस स्ट्रेटजी यूजुअली रिजल्ट्स इन अ नेट आउटफ्लो इन प्रीमियम. तो यूजुअली जो बुल कॉल लैडर स्प्रेड्स होता है वो डेबिट स्प्रेड्स ही होता है. जो आपका जो नेट रिजल्टिंग प्रीमियम होगा वो पॉजिटिव होगा, डेबिट होगा, एंड दैट डेबिट विल बी योर मैक्सिमम लॉस फॉर दैट स्ट्रेटजी. एंड बुल कॉल लैडर स्प्रेड में देयर आर टू ब्रेक इवन्स. एक अपर ब्रेक इवन होता है, एक लोअर ब्रेक इवन होता है. इसमें कब लॉस होगा, कब प्रॉफिट होगा, when is the time you should cash out from this strategy, we'll discuss that in detail. But all good until now. If you all can let me know in the chat box. I hope this slide is clear. You understood कि bull call ladder spread में कितने strikes involved है, इसको कब avoid करना चाहिए, that is very important. हाँ, if the stocks have announced results, then we can, yes. So if you are expecting post result, the stock is expected to be moderately bullish. And let's say result तक को IV आपका काफी बढ़ चुका है एंड अभी आईवी गिरने का चांसेस है, बिकॉज यू डोंट वांट अ राइज इन वॉलिटिलिटी. मतलब ऐसा भी नहीं कि एकदम आपका आईवीपीओ 20-30% है और सडनली 50-60% हो गया. आपको एकदम हाई वॉलिटिलिटी
बढ़ते हुए नहीं दिखना चाहिए. There can be reduction in volatility. मतलब you can look at high IV stocks or you can look at those stocks जिसका IV एकदम से फ्लैट हो और आने वाले फ्यूचर में कुछ इवेंट ना हो पर्टिकुलर स्टॉक में. सो पोस्ट रिजल्ट्स, जब कुछ रिजल्ट्स नहीं हो, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स नहीं हो, बजट नहीं हो, ऐसे टाइम पे यू कैन डिप्लॉय इट, बट नॉट ड्यू, स्पेशली रिजल्ट सीजन में आप अवॉइड करना. रिजल्ट के बाद अगर जब भी आपको लगता है रिजल्ट तक ऑलरेडी वॉलिटिलिटी पीक आउट हो चुका है और आप एक्सपेक्ट करते हो कि एक पर्टिकुलर रिजल्ट आए उसके बाद एक मॉडरेटली बुलिश मूवमेंट होगा, ऐसा नहीं कि अभी फॉर एग्जांपल फॉर एटर्नल जोमेटो का जो आया था सडनली 13% ऊपर चला गया था रिजल्ट के बाद, ऐसे केस पे ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगा. सो एकदम वो तो आउटराइटली बुलिश हो गया यहाँ पे. नाउ फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट समथिंग लाइक टाटा एलेक्सी, वो गैप डाउन खुला, धीरे 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 ऊपर चला गया था रिजल्ट के बाद. सो जब वो थोड़ा धीरे 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 मॉडरेटली बुलिश होता है, ऐसे केसेस पे यू कैन डिप्लॉय दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी. और is this part clear, guys? All good? If you can let me know in the chat box, is this slide clear? आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो if this part is clear, guys. All good? Can I go to the next slide? Okay, great. So now we are going to discuss the strategy in depth. इसका क्या scenario analysis है? How does the payoff look like? आपका view कब होना चाहिए? So let's say for example, Nifty right now is trading in a range. So 25,200 is a strong level for Nifty. And you feel there is no big downside for Nifty and you expect there can be a moderately sideways to bullish movement in Nifty here. बट अभी के लिए आप देखोगे वॉलिटिलिटी एकदम लोएस्ट पॉइंट पे है और सडनली कुछ न्यूज आ गया, वॉलिटिलिटी सडनली स्पाइक हो सकता है. सो ऐसे केसेस में इट इज थोड़ा डाइसी बिकॉज वॉलिटिलिटी एज द लोएस्ट पॉइंट. अभी हाई आईवी नहीं है, अभी एकदम लो आईवी चल रहा है निफ्टी पे. सो ऐसे केस पे यू कैन अवॉइड बिकॉज यू नेवर नो, कल एक सडनली एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आ गया जिसकी वजह से द वॉलिटिलिटी राइजेस और शूट्स अप क्रेजीली. सो ऐसे केस में यू कैन अवॉइड. हाँ, एकदम शूट अप होने के बाद देन यू expect कि volatility अब थोड़ा cool off हो सकता है. That is the time that you should be deploying this bull call ladder spread strategy. Okay, so let us start off with this. So like I said, इसका strategy deployment कैसा होता है? You buy an at the money call, you sell an out of the money call, and you sell a far away out of the money call here. So this is the component of a bull call spread strategy. We'll come to the risk to reward and break even point after we do this Excel sheet calculation. Okay. Okay, let me know if my Excel sheet is visible एकदम clearly. I hope आप सबको दिख रहा हो मेरा Excel sheet. अगर और थोड़ा बड़ा करना हो तो आप मुझे बोल सकते हो, so I can just increase, I can just zoom in so that you can view it even better. Is it fine? Yeah, in case of calendar spreads, we have different expiry dates, Harish ji, because उसमें एक let's say आप 24 जुलाई का एक एक्सपायरी हो गया, तो यूजली जो करंट एक्सपायरी है वो सेल करके और जो नेक्स्ट एक्सपायरी है उसको हम बाई करते हैं. सो यूजली कैलेंडर स्प्रेड्स में क्या होता है, फिलहाल के लिए यू आर एक्सपेक्टिंग not much volatility in the coming days, but you are expecting the volatility to rise forward. But we'll do a separate session on calendar spreads as well. So जैसे हमने पहले spreads देखा, रेशियो देखा, लैडर देखा, we'll go to calendar spreads as well, going forward. ठीक है. So we'll talk about what a bull call ladder spread is. So the expiry that I have taken is 31st July. That is the monthly expiry. ऐसा नहीं कि आप weekly expiry पे नहीं कर सकते हो. Because anyway, tomorrow is the weekly expiry for Nifty, so I have not taken 24th July. So at least you need to give 1 or 2 weeks. So you can go for at least 31st July का expiry. या तो आप क्या कर सकते हो, 7th August का एक्सपायरी के लिए भी जा सकते हो. सो सिटिंग टुडे यू कैन हैव 2 weeks का एक्सपायरी एज वेल, और यू कैन गो फॉर 14th August एक्सपायरी एज वेल. ठीक है. सो व्हाट आई हैव टेकन इन दिस एग्जांपल इज 31st July. So I have taken next week's expiry. So what is the current market price for Nifty? So we know Nifty closed at 25,219. So right now the price is 25,220. Okay. So let's say, for example, I want to deploy a bull call ladder spread in Nifty now. Now, so we know for a fact that bull call ladder spread में हम at the money call buy करते हैं एक lot, out of the money call sell करते हैं एक lot, और far away out of the money call sell करते हैं एक lot. So can anyone tell me what will be the at the money strike for Nifty if the current closing is at 25,220?
अगर हम लोग को करंट क्लोजिंग के हिसाब से अगर एक बुल कॉल लैडर बनाना है, सो कैन आई से माय at the money strike price is the strike price that is closest to the current market price? If you all can let me know in the chat box. अगर 25,220 है current market price, so can I say 25,200 will be your at the money? और हम एट द मनी को क्या करते हैं, हम एट द मनी का कॉल बाय करते हैं. कौन सा एक्सपायरी? 31 जुलाई का एक्सपायरी. अब 25,200 का प्रीमियम क्या है? सो लेट अस गो टू द ऑप्शन चेन. So I will select 31st July expiry year, and if I look at 25,200, I can see the call side the premium is 158.55. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे राउंड ऑफ करके उसको 158 लिया हुआ, so that you know 158 is the premium for 25,200 call, correct? And since we are buying this call option, can I say जब भी हम ऑप्शन बाई करते हैं, it results in a debit, so this is nothing but it is paid, because अब जब भी आप ऑप्शन बाई करते हो प्रीमियम goes out of your pocket, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने पेड लिखा है. Now you have to, let's come to the second leg. Now you will sell an out of the money call. Now out of the money call, now you can see you can create a 100 points का spread, or you can create a 200 points का spread, or you can create a 300 point spread as well. It's up to you कि आपको दोनों सेल के बीच में 100 पॉइंट का डिफरेंस रखना है, या 200 पॉइंट का डिफरेंस रखना है, या 300 पॉइंट का डिफरेंस रखना है. आइडियली आई वुड से either you can keep 100 points or 200 points. Don't go beyond 200 points, because फिर आपका ब्रेक इवन भी फिर उतना बड़ा हो जाएगा. So because इसमें moderately bullish है, so you don't want your spread difference to be too big. You ideally want your spread difference to be somewhere in the range of 100 points to 200 points here. So what I've done in this bull call ladder spread is यहाँ पे मैंने 200 पॉइंट का रेंज क्रिएट किया है. So 25,200 was my at the money. Now I have to sell out of the money call. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 25,400 को सेल किया है. Now if I look at 25,400, this is the strike and the premium is 69.4. So for the sake of understanding, I have taken 69 here, and since we are selling it, हमें प्रीमियम रिसीव होता है, तो यहाँ पे मैंने रिसीव लिखा हो. And we have to sell one more out of the money call. It should not be the same strike. अगर रेशियो स्प्रेड होता तो सेम स्ट्राइक होता, क्योंकि ये लैडर स्प्रेड है, तो ये जो थर्ड लेग होगा that will be a different strike. So I've gone even 200 points higher. So I've gone to 25,600, and इसका भी मैंने एक लॉट सेल किया हो. और if you look at what is the premium for 25,600, the premium is 27.9. So here I have mentioned 28, and again since we are selling, we are receiving it here. So is the strategy details clear? समझ में आया हमने क्या बाई किया और क्या सेल किया? If you all can let me know in the chat box. So 25,200 is the at the money call that we have bought. 25,400 is the out of the money call that we have sold. And 25,600 is again the out of the money call that we have sold here. So the difference between the three strikes is of 200 points. So you could have even done 25,200, 300, 400, or you could have done 25,200, 400, 600, or you could have done 25,200, 500, 800. So ऐसे 300 पॉइंट का भी, या 200 पॉइंट या 100 पॉइंट, ऐसे आप स्प्रेड्स भी आप क्रिएट कर सकते हो. Is this part clear? Okay, so now what is the resulting figure? So we have paid 158 rupees, we have received 69, and we have received 28. So can anyone help me with what is the net debit here? So like I said, usually the ladder spreads are for net debit and not for net credit. So 158 is paid, 69 is received, and another 28 is received here. So can anyone help me with what will be the net debit in this case? So 158 मेरे जेब से गया, 69 मेरे जेब में आया, और 28 भी मेरे जेब से आया यहाँ पे. So 158 minus 69 minus 28. So I can see my net debit here is 61. Perfect. So that is going to be my net debit. Correct. And what is the lot size for Nifty? So you know Nifty lot size is 75, and you multiply 61 into 75, you get a figure of 4,575 here. अभी के लिए don't just keep this 4,575 in your mind. अभी के लिए आपको कुछ करना नहीं है इसके लिए. All good? ठीक है. I'll come to what is the total capital required. मैं आता हूँ.
what is the maximum loss, what is the break even, upper break even, lower break even, इसका क्या, will come to those details later. All good until now? समझ में आया net debit तक? I hope is everyone with me. If you all can let me know in the chat box. So 25,200 I have bought, 25,400 I have sold, 25,600 I have sold. Net debit आ रहा है 61 points. You multiply that by the lot size, that is 75, you get 4,575 here. Now let's do a scenario analysis, guys. I think the most important part of the strategy. Okay, just a second. Perfect. 1 minute. So there are 3 legs. So हम लोग क्या करेंगे? हाँ, तरुण जी saying need sufficient capital for this. We'll come to that part, तरुण जी, because इसमें 2 sell है compared to 1 buy. So the capital is usually on the higher side. But if you get your view right, this can actually make some money for you. And that the best part why I like this strategy is even if your view goes wrong, your loss is restricted. I'll come to that part. मैं आता हूँ उस पे. अगर आपको याद है बैक स्प्रेड्स में भी अगर आपका व्यू गलत चला गया होता है, नीचे चला गया होता, फिर भी आपका पैसा बनता, बिकॉज वो क्रेडिट स्प्रेड है. यहाँ पे भी अगर आपका व्यू गलत चला गया हो, उल्टा चला गया, मतलब बेरिश हो गया हो, आपका नुकसान होगा क्योंकि ये डेबिट स्प्रेड है. बट आपका जो नुकसान होगा दैट विल बी लिमिटेड. तो मान लो कल आपने डिप्लॉय करके सडनली गैप डाउन भी हो गया, यू स्टिल डोंट हैव टू वरी because your strategy is hedged and your loss is fixed, at least if your view goes wrong. बट इसका ये स्ट्रेटेजी का ड्रॉबैक ये भी है कि अगर आपका व्यू सही भी चला गया, इफ यू आर बुलिश बट कुछ ज्यादा ही बुलिश हो गया, तो ये स्ट्रेटेजी आपको नुकसान भी दे सकता है. सो दैट मेक्स द स्ट्रेटेजी वेरी इंटरेस्टिंग. बट आई विल कम टू दैट पार्ट, विल डिस्कस दैट. Can everyone see the possible scenarios here? If you all can let me know in the chat box. So अभी हमने देखा निफ्टी 25,200 पे है और हमने जो एक्सपायरी लिया हुआ है वो 31 जुलाई का एक्सपायरी है. So what are the 3 things that can happen until next week? Can I say Nifty वही के वही रह सकता है, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा? That can be possibility number 1. Nifty can hover around 25,200 only. The other possibility is Nifty can move higher. It can go to 25,400. It can go to 25,600, 25,800, 25,900, 26,000. कहीं भी जा सकता है ऊपर ऊपर के तरफ. If you look at the downside, it can go to 25,000, it can go to 24,800, it can go to 24,500, or it can go to 24,000 as well. So either Nifty can stay in the same range, Nifty can go higher, Nifty can go lower as well. So these are the 3 possible scenarios, correct? Guys, ठीक है, ये समझ में आया possible scenarios? I hope you all are with me. बिकॉज मेरे को ये पार्ट एकदम रश नहीं करना है, एकदम धीरे धीरे करना है ताकि आपको समझ पूरा ये स्ट्रैटेजी जो है वो अच्छे से समझ में आए. So if you all can again let me know in the chat box. Yes, okay. So सबसे पहले हमारा क्या था, एट द मनी कॉल हमने बाई किया है और एट द मनी कॉल क्या था 25,200 का. उसका प्रीमियम क्या था 158. Now tell me guys, if you are buying an at the money call or let's say you are buying a call option, आपको प्रॉफिट कब होगा? जब प्राइस ऊपर जाएगा तब होगा, या प्राइस साइडवेज होगा तब होगा, या प्राइस नीचे जाएगा तब होगा प्रॉफिट. स्पेशली व्हेन यू आर बाइंग अ कॉल, when is it that you will make money? When the price moves higher, or when the price remains sideways, or when the price goes down, especially when you are buying a call option. If you all can let me know in the chat box exactly. So when the price goes up, can I say अगर 25,200 में ही क्लोज हुआ तो पूरा नुकसान हो जाएगा? Your whole 158, the premium that you have paid will go to zero and you will have a loss of 158 points. Similarly, if it goes down, can I say still you will have a loss because आपका व्यू गलत चला गया हो? Let's say Nifty goes to 25,400. Can I say you will make a profit of 200 points? Because the difference between 25,400 and 25,200 is 200. But is 200 your maximum profit? No, because आपने premium भी pay किया है 158 का. So 200 is what you gained, 158 is what you paid. So your net profit is 42 points. Similarly, if it goes to 25,600, you have gained 400 points, but आपके जेब से 158 का premium भी तो गया. So can I say your net will be 242 points? Similarly, it goes to 25,800. You have gained 600 points, but आपके जेब से 158 का प्रीमियम भी गया है.
So your net is 442 points. So this is your net P&L. आप इसको मल्टीप्लाई कर दो लॉट साइज, क्योंकि एक लॉट है तो 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, and you multiply the points into the lot size. Can I say you will get the absolute value? अगर नीचे जाएगा तो पूरा नुकसान होगा, साइडवेज रहेगा तो भी नुकसान होगा, जब ऊपर जाएगा तब जाके आपको इसमें प्रॉफिट मिलेगा. Is that part clear? Simple. Is the first legs P&L clear, guys? If you all can let me know in the chat box. All good until now? पहले हम लोग इंडिविजुअल लेग्स के P&L देखेंगे and then we will look at the combined P&L here. Now let's come to the second leg of that strategy. सो सेकेंड लेग है आपका 25,400 कॉल आपने सेल किया है. नाउ व्हेन यू आर सेलिंग अ कॉल ऑप्शन, व्हेन इज इट दैट यू विल मेक मनी? व्हेन द प्राइस गोज हायर, और व्हेन द प्राइस रिमेन्स साइडवेज, और व्हेन द प्राइस गोज डाउन. सो व्हेन यू आर सेलिंग अ कॉल, व्हेन इज इट दैट यू मेक मनी? जब प्राइस ऊपर जाता है तब, या जब प्राइस साइडवेज रहता है तब, या फिर प्राइस नीचे जाता है तब. यू आर सेलिंग अ कॉल ऑप्शन. नाउ थिंक व्हाट इज द व्यू, कब आपको पैसा बनेगा जब आप कॉल ऑप्शन सेल करते हो. कैन आई से इफ यू हैव सोल्ड अ 25,400 कॉल ऑप्शन, as long as it stays at 25,400 or goes below 25,400, you will make money. So आप यहाँ पे देख सकते हो at 25,400 the whole 69 will become zero. So when 69 becomes zero, since you have sold it, you have made 69 points. Similarly, अगर ये देखो नीचे चला गया तो पूरा आप 69 पॉइंट्स आप पॉकेट कर सकते हो. बट अगर मान लो 25,600 चला गया, ऊपर चला गया, तो आपको नुकसान होगा. कितने का नुकसान होगा? 25,600 और 25,400 के बीच में डिफरेंस क्या है? 200 पॉइंट का नुकसान होगा आपका टोटल. बट 200 पॉइंट का इज योर टोटल लॉस. बट हाउ मच हैव यू रिसीव्ड बाय सेलिंग? कैन आई से 69? So 200 is your loss, but you have received 69. So can I say your net loss will be 131? That is the difference between 200 and 69. Similarly, मान लो 25,800 चला गया हो, आपका नुकसान कितना होगा? 400 पॉइंट का. दैट इज डिफरेंस बिटवीन 25,800 एंड 25,400. बट आपको सेल करने पर कितना रिसीव हुआ? 69. सो कैन आई से योर नेट लॉस विल बी 331. So this is your net P&L. Again, आप एक लॉट बेचते हो, you multiply that by 75, and you can see here you get your absolute value. So if it remains sideways, if it goes down, you make money. But if you have sold a coil and if the price goes higher, can I say this is when you start losing money? Is the second leg's P&L clear, guys? If you all can let me know in the chat box. All good until now? I hope आपको ये second leg भी समझ में आया कि सेकंड लेग का हम P&L कैसे कैलकुलेट होता है यहाँ पे. See all this you can see there are different softwares that are available. Opstra हो गया या काफी सारे हैं जहाँ पे आप सिर्फ इनपुट कर दो, आपको पूरा ये मिल जाएगा. बट कंसेप्चुअली अगर आपको समझना है कि हाउ द प्रीमियम मूव्स एट डिफरेंट पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस, आई थिंक द बेस्ट वे टू डू इट इज विद द हेल्प ऑफ एक्सेल हियर. सो इससे आपको एक्चुअली कंसेप्चुअली पता चल जाएगा कि नीचे जाएगा तो क्या, साइडवेज रहेगा तो क्या, ऊपर जाएगा तो क्या, एंड व्हाट इज योर पोजीशन. Similarly, if we go to the third leg here, so let me go to the third leg of this strategy. So third हमने 25,600 का call sell किया है, correct? Now if we are selling 25,600, can I say as long as Nifty stays at 25,600 or goes below 25,600, can I say we'll make money? So यहाँ पे हमने कितना receive किया है? 28 points. So जैसे 24,400 के नीचे रहेगा तो आपको पूरा 69 पॉइंट्स मिलेगा. वैसे ही 25,600 के नीचे क्योंकि आपने सेल किया है, so you will capture in 28 points. You will make a loss and only when the price goes about 25,600. So let's say the price moves to 25,800, तो आपका नुकसान कितना है? 25,800 minus 25,600, that is about 200 points. But is 200 your max loss? नहीं, क्योंकि आपको बेच के 28 मिला भी है. So your max loss is 172. So this is your net P&L. And you multiply that by the lot size, you will get the absolute value. So as long as it stays in the range or it goes down, you will make money. But अगर आपने कॉल बेचा है और प्राइस ऊपर चला गया तो आपको नुकसान हो जाएगा. So I have got P&L for the first leg, I have got P&L for the second leg, I have got P&L for the third leg here. Now let us see the net P&L now. Net P&L अभी क्या करेंगे? हम combine करेंगे P&L to find out the net P&L. So यहाँ पे जो
लॉस है वो लॉस प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट प्रॉफिट ऐसे. सो आपको नेट पीएनएल मिलेगा यहाँ पे. नाउ व्हाट इज इट दैट यू ऑब्जर्व इन नेट पीएनएल गाइस? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. ऐसा आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो नेट पीएनएल में? आपका व्यू क्या था बुल कॉल लैडर स्प्रेड में? कैन आई से आपका व्यू था मॉडरेटली बुलिश. बट मान लो अभी 25,200 में है, 25,200 में है, बट आप बेरिश हो गया, मार्केट मार्केट चला गया नीचे, 25,000 हो गया, मान लो 24,800 चला गया, मान लो 24,500 चला गया. In that case, what is your loss here, guys? If you all can let me know in the chat box. Do you see your loss is fixed? Of course, loss होगा because ये strategy it's a moderately bullish strategy. But अगर bearish हो गया तो loss होगा. और loss क्यों होगा? क्योंकि debit spread है, और debit spread है तो your loss is fixed. Now look at the figure of the loss here, guys. 4,575. क्या आपको याद है ये 4,575 हमने कहीं तो देखा था स्टार्ट ऑफ द सेशन में? जस्ट थोड़ा 10-15 मिनट पहले हमने ये फिगर देखा था 4,575. आपको याद आ रहा है ये 4,575 कहाँ से आया है? इफ यू कैन लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. आपको याद है जो नेट डेबिट आया था ये बुल कॉल लैडर स्प्रेड का, वो कितना था यहाँ पे? If you see the net debit in the bull call ladder spread was 61, which was 158 the premium that you paid, 69 the premium you received, 28 the premium you received, जो 61, and you multiply that by the lot size 75, आपको ये 4575 आया था यहाँ पे. मैंने आपको बोला था याद रखना, हम आगे जाके फिर से रिविजिट करेंगे. So the beauty of this strategy is moderately bullish, but let's say you deploy the strategy and the strategy goes wrong, आपका व्यू गलत चला गया हो, मान लो कल गैप डाउन भी हो गया हो या मार्केट नीचे चला गया हो, यू स्टिल डोंट हैव टू वरी बिकॉज योर स्ट्रेटजी इज हेज्ड. आपको लॉस होगा बट दैट लॉस विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द नेट डेबिट व्हिच इज 4,575. अच्छा, टेल मी व्हाट विल हैपन इफ निफ्टी गोस टू 24,000. मान लो कल 1200 पॉइंट का गैप डाउन हो गया, विल योर लॉस स्टे द सेम और विल योर लॉस इंक्रीज? इफ यू ऑल कैन लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. ये जो 24,500 है यहाँ पे, मान लो फॉर सम रीजन कल एक नेगेटिव न्यूज आ गया, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, एंड निफ्टी गोज डाउन बाय 1200 पॉइंट, देयर इज अ बिग गैप डाउन. डू यू थिंक द लॉस विल रिमेन द सेम? लेट अस सी. लेट मी, इंस्टेड ऑफ 24,500, लेट मी मेंशन 24,000. हैज एनीथिंग चेंज्ड गाइस? 24,000 में नीचे कुछ फिगर चेंज हुआ? लेट्स से इट गोज टू 23,800. एनी चेंज इन द फिगर? Let's say it goes to 23,600. Any change in the figure? Let's say it goes to 23,500. Any change in the figure, guys? So the best part of the strategy is if it stays, if it goes कितना भी नीचे चले जाए, मान लो आपको एक डर रहेगा ना, अरे बुलिश अगर नीचे चला गया तो जाने दो, आपको लॉस होगा, बट you can still have a sound sleep because you know your loss is restricted to your net debit, that is 4,575. Now tell me, कौन सा ऐसा स्ट्राइक प्राइसेस है जहां पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट नजर आ रहा है? So you can see the maximum profit here at 25,400 I can see 10,425, and at 25,600 I see 10,425 here. So you can see my maximum profit is between 25,400 to 25,600, and my maximum profit is restricted to 10,425. So right now Nifty's price is 25,200. I see if Nifty goes to 25,400, I can see making 10,000. Even if it goes to 600, I can see 10,000. If it stays between 24 to 600, I can see 10,425. But do you see why 25,400 और 600 में ही प्रॉफिट है, whereas 25,800 में फिर से लॉस हो जा रहा है? सर अभी तो आपने बोला है मॉडरेटली बुलिश है तो प्रॉफिट होना चाहिए, राइट? बट 400 और 600 स्ट्राइक में आपको प्रॉफिट दिख रहा है, बट 800 स्ट्राइक में आपको लॉस दिख रहा है. हैव यू ऑब्जर्व दैट? 25,800 strike में you can see a loss here. Now, do you see what is the speciality of 25,400 and 25,600? And ये दो strike में अगर closing हुआ तो ही आपको profit क्यों आ रहा है?
ब्रेक इवन से बाहर हो गया, ओके, सेल ऑप्शन टेकिंग अ हिट, ओके, बट रिमेंबर द बुल कॉल स्प्रेड लैडर स्ट्रेटेजी जो हमने डिप्लॉय किया था, व्हाट वर द सेल स्ट्राइक्स? एट द मनी कॉल बाय वाज 25,200, राइट? सेल स्ट्राइक्स कौन सा था? जो हमने 2 आउट ऑफ द मनी कॉल सेल किया है, वो स्ट्राइक्स कौन सा था वहां पे? कैन आई से इट वाज 25,400 एंड 25,600? इसका मतलब है एज लॉन्ग एज इट स्टेज बिटवीन 25,400 टू 25,600, दैट इज द टाइम यू विल मेक मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर ये जो आपका जो दो सेल स्ट्राइक्स है 400 600 उसके अंदर ही रहता है, ये दो के बीच, दैट इज व्हेन यू मेक अ मैक्सिमम प्रॉफिट। बट व्हाट इफ इट गोज अबाउट 25,600 गाइस? आपका जो थर्ड सेल स्ट्राइक था दैट वाज 25,600, कैन आई से यू स्टार्ट मेकिंग अ लॉस नाउ? बिकॉज ये स्ट्रैटेजी मॉडरेटली बुलिश है। अगर सडनली आउटराइटली बुलिश आ गया, मतलब 25,200 से 25,800 चला गया, कैन आई से यू आर अगेन सीइंग अ लॉस ऑफ 4,575 at 25,800? बिकॉज 25,400 25,600 तक आपका जो सेकेंड स्ट्राइक प्राइस है वहां तक रहेगा तो आपका प्रॉफिट बनेगा। अगर करंट लेवल से नीचे चला गया तो आपका लॉस होगा, दैट विल बी फिक्स्ड। बट मान लो 25,600 के ऊपर चला गया, नाउ निफ्टी हैज टर्न्ड आउट एक्सीडिंग ब्रेक इवन at 25,800, my loss is 4,575 guys. What will happen if Nifty goes to 26,000? Will I still have a loss of 4,575 or will it be different? Let's say Nifty is at 25,800. Let's say Nifty goes to 26,000. Will my loss change? हमने डाउन साइड में देखा था 24 गया, 23,800 गया, 23,500 गया था, my loss was restricted to 4,575. But on the upside, is my loss restricted to 4,575? I know for a fact if it stays between the two sell strikes, I will make money. But what if it goes about 25,600? Do you think loss will remain the same? Let's say I make it 26,000 guys. Oh my God. Suddenly the figure changed on the downside here. At 26,000, the loss that was 4,575. Now that has increased to 19,575. Let's say it goes to 26,200. The loss is even bigger now. It's gone to 34,575. Let's say Nifty goes to 26,500. The loss exceeds to 57,000 now. So do you see what has happened? In this strategy, if it goes down, there is a fixed loss. If it stays between the two sell strike price, you will have maximum profit. But if it exceeds your break even, your higher break even, there is no limit to the loss here. You can have unlimited loss. तो स्ट्रैटेजी गलत जाएगा तो चल जाएगा, एक बार लॉस हो सकता है, बट अगर स्ट्रैटेजी सही गया और कुछ ज्यादा ही सही चल गया, आउटराइटली बुलिश हो गया, तो भी आपको इसमें नुकसान है. सो यू हैव टू एग्जिट द मोमेंट इट looks like it is going to cross about 25,600. So this is the beauty of this strategy. And if you see, how do we so if it closes between two sell strike price, that is between 25,400 25,600, you will make money. If it goes below lower break even, आपको fixed loss होगा. But if it goes above upper break even, यहाँ पे आपको unlimited loss हो सकता है. That's the beauty of this strategy here. And what is the fixed loss? Fixed loss we know जो net debit है, that is 4,575. And how do you calculate the lower break even? Lower break even का calculation है जो lower strike है plus the net premium paid. Now what is the lower strike? So सबसे lower is 25,200. What is the net premium paid? 61. So lower break even is 25,261. तो 25,261 के नीचे जाता है, आपका जो fixed loss है 4,575 वो होगा. What is the upper break even? So you have cushion until 25,739. So that is higher strike, which is 25,600. The difference between two sell strike price, that is 200 minus the net premium paid, that is 61. So अभी फिलहाल निफ्टी का प्राइस है 25,200. आपको अपर ब्रेक इवन का क्वेश्चन कहां तक है जहां पे आप मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकते हो, that is until 25,739. So you still have around 539 points movement on the upside. If it goes below 25,261, you lose 4,575.
If it stays until 25,739 and about 25,261, you make some money. If it stays between 400 to 600, you make money. But if it goes above 25,739, that is above the upper break even, there is no limit to your loss here. नहीं, बट आपको फिर ऑल सब एग्जिट करना पड़ेगा एक साथ सचिन जी. ऐसा आप इंडिविजुअली एग्जिट करना एडवाइजेबल नहीं है. यू हैव टू प्ले इट आउट टिल द टाइम इट इज बिटवीन दैट अपर स्ट्राइक का रेंज तक. आप जैसे ही हो, आपका जो अपर ब्रेक इवन है 25,739, मतलब मान लो 25,720 730 के आसपास, अगर आपको लग रहा है यहाँ से और 100-200 पॉइंट का मूवमेंट आएगा, इट्स बेटर टू एग्जिट एट दैट टाइम. जब तक वो अपर ब्रेक इवन क्रॉस नहीं करता है तब तक आप सेफ रह सकते हो. डाउन साइड में भी आपका लोअर ब्रेक इवन भी टूट गया है 25,261, स्टिल आपको मालूम है लॉस होगा, बट वो लॉस फिक्स्ड होगा. बट अगर अपर ब्रेक इवन टूट के ऊपर जाने वाला है, दैट इज द टाइम यू शुड नो दैट दिस स्ट्रेटजी इज नॉट गोइंग टू मेक यू मनी. See, there is no particular win rate for this strategy, Harish ji. Matlab, I don't have the backtest results with me. Not that I have used this strategy often on different stocks to, give you what the data is. But it depends. It relatively आपको, stock by stock या index by index आपको देखना पड़ेगा. It depends on how you manage this strategy. I think that's what matters at the end. Now, if I can show you कि ये Opstra में अगर हमें देखना है, so this is my Opstra's website. So what I will do is I will select Nifty here. Now I'll show you how the payoff for this strategy looks like. So यहाँ पे मैं options जाऊंगा. I'll select 31st July expiry. Here I will select 25,200 call option. So this is we buy one lot. So I'll add position. Then I will select 25,400. This is call. I will select sell one lot. I will add position. Then I will go to 25,600 call option. I will sell one lot. Option price is 28 and I will add here. So the moment I add this, so you can see 25,200 call option buy, 25,400 call option sell, 25,600 call option sell. Now, if you look at the payoff, if it goes down below the lower break even, the loss is fixed. जैसे हमने देखा था 4575, because हमने rounding off किया था premiums का. यहाँ पे पॉइंट्स पे, सो यू कैन सी 4,590 का फिक्स लॉस है. अगर वही 25,400 25,600 के बीच होता है, यू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट, दैट इज अराउंड 10,410. बट इफ द प्राइस मूव्स अबाउट द हायर ब्रेक इवन, दैट इज अबाउट 25,739, here you will start seeing unlimited profits here. So that is how pay off flat line, then थोड़ा सा ऊपर, फिर then एकदम से लाइन नीचे. So above upper break even, you will have an unlimited loss. Below lower break even, you will have a fixed loss. And between those break evens, you will have some money here. And between 400 to 600 is when you will make maximum profit here. And what is the margin for this strategy? So you will require close to 2.5 lakhs to deploy this strategy here, especially because यहाँ पे दो sell lots है as compared to one lot. But then again, इसमें the only worrying thing is if it goes outrightly bullish, because suddenly आपका volatility में spike होगा. हम ऐसे strategy में हमें volatility spikes नहीं चाहिए. इसके लिए हम ऐसे stocks या ऐसे index में देते जिसका IV already high है और थोड़ा सा volatility में reduction आए. Volatility reduction में आना मतलब premium का इतना move नहीं होना. Suddenly ऊपर जाना मतलब your call premiums will just shoot off. And your sell will start giving you a loss, and that is why you see an unlimited loss once the upper break even is taken out. Is this part clear, guys? All good? Understood this bull call ladder spread strategy? I hope आपको ये एकदम simple way में समझ में आया होगा कि ये bull call ladder spread क्या है, bull call spreads क्या है, ratio spreads क्या है. So every month we do one or two strategies like this, wherein we discuss one strategy in depth. So if it goes below lower break even, you exit. Till the time it stays between the break even, you hold. The moment you feel like it is going to break the upper break even, that is when you exit from this strategy here. Because एकदम outrightly bullish हो गया तो आपका जो नुकसान होगा, that will be unlimited. So that was all about the bull call ladder spread strategy today, guys. And I think it's kind of funny where a lot of people, they charge a lot of money outside to teach the strategies. Yeah, advanced strategies बोल के a lot of people charge a lot of money outside. Nevertheless,
I hope this strategy is clear. You understood what a bull call ladder spread is. If you have any doubts, any queries, guys, do let me know. We do have around 3-4 minutes to go before we wrap up the session. So I hope आपको easily समझ में आया होगा. So this is how the payoff looks like. On the lower side, there is a fixed loss. Till the time it is in the break even, you will have a maximum profit. But if it goes above the higher break even, this strategy will start resulting in a loss here. Good strategy. I think in the next month we'll discuss what calendar spreads are. So calendar spreads will have involve two different expiries. So bull call spread is the simplest. Ratio spreads again is kind of safe. Bull call spread again you can use as an extension to ladder spread. आप तब deploy कर सकते हो जब आपको एक bull call spread का extension चाहिए. So this is also a good strategy if you feel the price is going to be moderately bullish and there is not going to be any outright movement in the stocks here. Clear? So that was all about today's strategy on bull call ladder spreads, guys. So next week again on Monday we'll be having one session. So that will be on option chain. तो अब लोग option chain analysis में के बारे में हम जानेंगे. And tomorrow, as usual, tomorrow is Nifty's weekly expiry, and we'll meet for the mid-market session at 12:30, guys. Yeah, gap up is one risk that you should be, but still, from the current market price until the upper break even, there is a good, 500, 550 points ka gap. So even if Nifty gaps up, it might gap up by 200, 300 points, not more than that. So I've never seen Nifty gapping up by almost 600, 700 points. That can happen provided there is an event. And we are never going to deploy this strategy in case there is an event that is scheduled. So on normal days, Nifty opening up by more than 200, 300 points is kind of ruled out. Gap down hoga to theek hai. Anyway, we know it's a loss of fixed loss hai. But on the upper side, still till that thoda gap up okay or break even pe hoga, you can still exit out the strategy and come out profitably. Clear. Thank you so much, Sachin ji. So that's all from my end, guys. And I'll see you all tomorrow for the mid-market session at 12:30 on SBI Securities YouTube channel. Until then, take care, stay safe, and I'll see you all soon. Take care, guys.